कलम मुंबई के इस वर्चुअल सत्र में मैं स्वाति अग्रवाल, प्रभा खेतान फाउंडेशन व एहसास विमेन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश और दुनिया अभी कोरोना नामक महामारी के चपेट में है। अच्छी बात यह है कि इसकी वैक्सीन बनने की दिशा में काम हो रहा है। कोरोना के इस माहौल और चुनौतियों से तालमेल बिठाते हुए फाउंडेशन ने कलम के सत्रों को वर्चुअल कर दिया है, ताकि साहित्य प्रेमी अपने घर के सुरक्षित माहौल में ऐसे कार्यक्रमों का आनंद उठा सके और साहित्य, कला, संस्कृति की अपनी बौद्धिक खुराक से वंचित ना रहे। प्रभा खेतान फाउंडेशन भारत और दुनिया के लगभग 30 शहरों में अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के अभियान में जुड़ी हुई है। हमें खुशी है कि कलम के आज इस सत्र में हमारे अतिथि हैं दीपक रमोला जी, देहरादून निवासी, रमोला लेखक, अभिनेता, शिक्षक, वक्ता, समाज सेवी, कवि और गीतकार हैं। आपका मानना है कि जीवन में कौन सी सीख कहाँ मिल जाए कोई निश्चित नहीं, लेकिन सीख और अनुभव को बटोरने और फिर उसे आगे किसी और की जिंदगी को संवारने के लिए फॉरवर्ड करना एक अच्छा काम है। आपने अपनी पहली कविता 12 साल की उम्र में लिख दी है। आपका एक काव्य संग्रह है, इतना तो मैं समझ गया हूं, काफी चर्चित है। हाल ही में आपकी पुस्तकें 50 toughest questions of life, अपने मांझी द माउंटेन मैन, टाइम आउट, डियर डायरी, मॉनसून शूट आउट और वजीर जैसी फिल्मों के गीत भी लिखे हैं। आपके प्रसिद्ध गीत अतरंगी यारी और को अमिताभ बच्चन व फरहान अख्तर ने आवाज दी है। आपने फिल्म बॉडीगार्ड तथा टीवी धारावाहिक ससुराल सिमरका में एक्टिंग भी की है। आप प्रोजेक्ट फ्यूल नाम की एक बड़ी परियोजना भी चलाते हैं। इसी तरह आप संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर उत्तराखंड के गांवों तक, चाहे देह व्यापार हो, बाल श्रम हो या रेफ्यूज कैंप, नेपाल में मानव तस्करी हो या भूकंप से पीड़ित, भूटान में माध्यमिक विद्यालयों हो या अफगानिस्तान के बच्चे, हर जगह जरूरतमंद लोगों के बीच मौजूद होते हैं। आपके छात्रों ने 4 वर्ष के बच्चे हैं, लेकिन 96 वर्ष की उम्र के नानी दादी तक शामिल है। आपकी अनूठी शिक्षण शैली को फिनलैंड ने विश्व के टॉप 100 एजुकेशन इनोवेशन में शामिल किया है और इसे बेल्जियम में पढ़ाया भी जाता है। A very, very hearty, warm welcome to the Globetrotter of Enlightenment, Deepak Ramola. Thank you so much for being here with Ehsaas Mumbai and Prabha Khaitan Foundation. Namaste, Swati ji. Thank you so much for that kind introduction. Very happy to be back with Prabha Khaitan Foundation and very happy to be part of this Mumbai edition. Thank you. Thank you so much, Deepak ji. We also have amongst us Praneet Babbar, who's an accomplished architect by profession, having done her master's in architecture from the prestigious Rhode Island School of Design. Her studios PMB and furniture brand Living by Studios PMB have completed 100 projects since its inception. In an endeavor to give back to society, she set up Amritsar's first and largest women's think tank, Fulkari, WOA, followed by the philanthropic wing CAN, which works in the field of cancer prevention, education, and environmental awareness. Last but not the least, rather the most important, she is the Ehsaas woman from Amritsar. Let's bring the two think tanks together, Deepak Ramola and Praneet Babbar for Ehsaas Mumbai. Thank you so much, Swati. That's a
very, very generous introduction. Thank you. दीपक जी, आपसे हमेशा बातचीत करने में बहुत मजा आता है. आपका काम हमेशा मुझे अर्चित कर देता है. And most recently, आपकी नई किताब 50 Toughest Questions of Life. As Dr. Samdhu Chhetri says, reading through this book, you can hear the heart of a real lifetime explorer in the uncharted universe. His book proposes that readers look for the crack in their lives where the light is passing through and cultivate it. ये सही मायनों में आपका परिचय देता है. Deepak, your passion I know is Project Fuel. आप सुनने वालों को कुछ प्रोजेक्ट फ्यूल के बारे में बताएंगे? जी, सबसे पहले तो नमस्ते प्रणीत जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला इस बातचीत के लिए. हाउ मच अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट आई हैव फॉर यू एंड योर वर्क. सो थैंक यू टू ऑल दोज हु जॉइन्ड एंड स्पेशली यू फॉर क्यूरेटिंग दिस कॉन्वर्सेशन. प्रोजेक्ट फ्यूल प्रणीत जी एक ऐसी परियोजना है जिसकी शुरुआत मेरे स्कूली सफर में हुई. अक्सर मैं ये कहानी बताता हूँ, बट प्रभा खेतान के जो सुनने वाले हैं उनके लिए खासकर ये दोहराना चाहूंगा कि मेरी जो माता जी हैं उन्हें 5वीं कक्षा में उनकी दादी ने स्कूल से जो है निकाल दिया था, क्योंकि तब आपको पता है 1960s में एक अवधारणा थी कि लड़कियां जो है स्कूल ना जाएं, लड़कों के साथ ना पढ़ें. तो मेरी जो माता जी हैं उनकी दादी ने भी उसी धारणा के चलते उन्हें स्कूल से निकलवा दिया. पर जब मैं बड़ा हो रहा था मुझे कभी इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि मेरी जो माँ है वो स्कूल नहीं गई. शी इज सो स्मार्ट, इतनी मतलब काबिल है, इतना पिताजी से बहस हो जाए तो हर बहस में वही जीतती हैं. बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स आर ए लेवल एंड शी हैज अ ग्रेट वर्ल्ड व्यू. तो मुझे लगता था कि ये शायद झूठ बोल रही है ताकि मैं और मेरी बहन के अच्छे नंबर आ जाए, इसलिए वो रियलिटी शो में एक स्टोरी होती है ना जो आपको इमोशनल स्टोरी बतानी पड़ती है. बट माय मदर ऑलवेज सेड कि ये सच है, ये तथ्य है कि मैं स्कूल नहीं गई, पर जीवन मेरी कक्षा है, जीवन मेरा स्कूल है. और मुझे लगता था कि अगर मेरी माँ सिर्फ जिंदगी से इतना कुछ सीख रही है तो इसका मतलब है कि जीवन जीने वाला हर इंसान कुछ ना कुछ जरूर सीख रहा है. और ये ज्ञान, ये विवेक मुझे कहाँ प्राप्त हो सकता है. तो उसी जिज्ञासा के चलते मैंने अलग अलग क्षेत्रों के अपने दोस्तों के, ट्यूशन टीचर्स के लाइफ लेसन इकट्ठा शुरू करना मतलब एक तरीके से खुद को प्रेरित किया. और आई थिंक आई कैन कन्फेस कि पहले स्कूल में जब मैंने ये लाइफ लेसन और लोगों की कहानियां इकट्ठा शुरू करना का काम किया तो मकसद ये नहीं था कि मैं एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं और इसका करिकुलम ऑल ओवर द वर्ल्ड सेटअप हो, स्टैब्लिश हो. बट एक्चुअली मकसद था, मुझे लगता था कि 18 साल तक मेरे पास इतना ज्ञान होगा कि मैं दुनिया का पहला ऐसा इंसान हूंगा जो कोई गलती नहीं करेगा. पर जब मैं 18 साल तक पहुंचा तो मुझे लगा कोई गलती ना करना ही सबसे बड़ी गलती होगी. एंड सो आई थिंक प्रोजेक्ट फ्यूल के तहत पिछले 11 सालों से जो मैं काम कर रहा हूँ वो है लोगों के जीवन की शिक्षाओं को इकट्ठा करना, उन्हें पढ़ाई, कला और फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना. So as I like to tell my relatives who ask me, what do you really do? I get paid to have conversations and it's very safe. दीपक, आपका इस किताब 50 Toughest Questions लिखने की प्रेरणा कब और कहाँ मिली? जी, बहुत अच्छा सवाल है प्रणीत जी, क्योंकि जो 50 सवाल हैं उन्होंने इतना अटेंशन ग्रैब किया हुआ है आजकल पिछले 2-3 हफ्तों में कि लोग अक्सर उसके पीछे के सफर तक पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि सवाल अपने आप में दिलचस्प हैं. मैं 2014 और 2015 के करीब अफगानिस्तान में एक स्कूल में पढ़ा रहा था, काबुल में, जो कि वाज द लास्ट रिमेनिंग स्कूल जो कि कोएट था बिफोर द तालिबान टुक ओवर. और the school was actually bombed unfortunately in 2015 December and shut down completely. तो मैं भी वहां जा नहीं पाया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से. और आखिरी समय में स्कूल के बंद होते हुए एक जो लड़की थी 21 साल की, वो स्कूल की प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझसे एक बड़ा खूबसूरत लाइफ लेसन शेयर किया. उन्होंने कहा कि लाइफ इज नॉट अबाउट गिविंग इजी आंसर्स, इट्स अबाउट आंसरिंग टफ क्वेश्चंस. जीवन आसान जवाबों का सफर नहीं, मुश्किल सवालों का सफर है. और उस एक वाक्य ने मुझे सोचने पे बहुत मजबूर किया कि मुश्किल सवाल क्या है.
कौन इन्हें पूछ रहा है, कितनी बार पूछ रहा है। और 2015 से मतलब मैंने ये मुश्किल सवाल इकट्ठा करना शुरू किए इंटरनेट से, किताबों से, दोस्तों से, और 3000 मुश्किल सवालों का एक संग्रह मैंने इकट्ठा किया। और कई सारे सवालों को जवाब देते हुए खुद रोना भी आता था, क्योंकि वो सवाल बहुत मुश्किल थे। और उनको निचोड़ते निचोड़ते, सार निकालते निकालते ये 50 सवाल जो इस किताब में पिरोए हैं, वो सवाल हैं जिनमें मुझे सबसे ज्यादा मुश्किलात हुई जवाब देते हुए। जी, तो इस तरीके से किताब निरूप। Amazing. Deepak ji, I see that your book is a series of question and answers. आपके लिए प्रश्न का क्या महत्व है? जी एक डेविड कॉपर राइडर का बहुत मशहूर स्टेटमेंट है प्रणीत जी की वी लिव इन अ वर्ल्ड आवर क्वेश्चंस क्रिएट। हम उस दुनिया में रहते हैं जिन्हें हमारे सवाल पैदा करते हैं। तो मुझे लगता है सवालों का महत्व ये है कि आप किसी भी सिचुएशन में, और ये सिर्फ इस किताब से संबंधित एक बात नहीं है, बट ये मेरी खुद की रियलाइजेशन है कि आप जिस तरह का सवाल पूछेंगे आप उसी तरह का जवाब पाएंगे। तो अगर आप किसी बड़ी मुश्किल में हैं और आप सवाल पूछें कि ये मेरे साथ क्यों होता है या क्यों हो रहा है, तो आप एक बहुत ही जीर्णशीर्ण अवस्था में, एक बहुत कमजोर इंसान के रूप में उस परिस्थिति से जूझेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपके पास अवसर नहीं है, सुविधाएं नहीं है। पर अगर आप उसी सिचुएशन में सवाल बदल कर पूछें, ये मुश्किल घड़ी मुझे क्या सिखाना चाहती है, तो तुरंत आप होपफुल भी होंगे, आप सशक्त भी होंगे, और आपका रवैया भी बदल जाएगा। तो मुझे लगता है जीवन की हर परिस्थिति में एक छोटे से छोटी बात से लेकर एक बड़े से बड़ी बहस तक सवालों का जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है, इट इज रियली रियली ग्रेव। क्योंकि हम जब किसी से पूछते हैं आप ठीक तो हैं या कैसे हैं आप, तो हमारे नॉर्मल स्मॉल टॉक से लेकर दोस्तों के साथ दुख बांटने तक में सब जगह सवालों का बहुत महत्वपूर्ण एक रोल है। और लास्ट इस चीज में मुझे एक बात ये लगती है प्रणीत जी की सही सवाल पूछने से सामने वाले को आप जितना कंफर्ट दे सकते हैं उतना सही जवाब से नहीं, क्योंकि जवाब हर इंसान के लिए अलग है। अगर मैं आपसे कोई एक राय मांगू तो शायद आपकी राय जवाब रूप में मेरे लिए सही हो ना हो, पर अगर आप मुझसे सवाल इस तरीके से पूछे कि मुझे अपना जवाब ढूंढने का अवसर मिले, मौका मिले और सेफ महसूस हो, तो आई थिंक वी ऑल विल बी empowered. So true, Deepak. If you look at it, this is exactly what life coaches do. आजकल इतना ट्रेंड चला है फॉर लाइफ कोचेस, यही तो करते हैं, आपको पूछते रहते हैं और जवाब भी कोई नहीं देता। आप अपना क्वेश्चन भी पूछते हो and the jawab is from you. This is, you're so right. It's about asking the right questions. So true. दीपक, इस किताब का यह प्रश्न एक मुझे बहुत चुका दिया। If you could only see or hear for the rest of your life, which sense would you pick? Deepak, can you describe what the answer to this question is from the book? Absolutely. And before I answer that, Praniti, you said something very interesting about life coaches and therapists. I just want to add, actually my team, when I finished writing this book, और जब मैंने उन्हें पहली बार फर्स्ट ड्राफ्ट पढ़ के सुनाया, तो उन्होंने कहा कि ये किताब 50 toughest questions of life is a pre-therapist book which you should read. True. Very true. So you can introspect and then head to professional help, but you can be prepared for the professional help's questions by answering these questions. So thank you for that metaphor. I think it's really apt. It's absolutely perfect, Deepak. This is what the world needs right now. True, absolutely. Actually, आजकल के ज़माने में, कोविड के ज़माने में, book like this that answers the questions through other people's stories, कहानियाँ सुन के, जैसे आपने कहा था, your mother taught you so much just through life stories. This is absolutely brilliant. अब जरा आप, can you describe this particular question? It just really intrigued me. Yes, absolutely. So the question is कि अगर आप सिर्फ देख सकते या सुन सकते, तो इन दोनों में से आप कौन सी शक्ति चुनना पसंद करेंगे? मेरे लिए ये मुश्किल सवाल इसलिए था क्योंकि एक फेलो आर्टिस्ट ने मुझसे ये सवाल पूछा
and I literally had an existential crisis, क्योंकि सुनने की क्षमता आपको, मतलब आप गाने सुनना पसंद करते हैं, मैं तो मतलब राइटर हूँ, गीतकार हूँ, तो मेरे लिए सबसे पहला थॉट था, माय गॉड, आई वोंट बी एबल टू लिसन टू सॉन्ग, and if I take away my ability to see, that means I cannot observe, I cannot have this visual sense of wonder. तो इसलिए मुश्किल सवाल था, पर इससे भी ज्यादा जो इसका जवाब मैंने किताब में लिखा है, इज एन एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। 17 साल से 22 साल तक की उम्र तक मैंने, प्रणीत जी, दृष्टिबाधित बच्चों को नेशनल एसोसिएशन विद फॉर द ब्लाइंड और एहसान फाउंडेशन के साथ पढ़ाया। और एक मर्तबा, छोटी सी कहानी है, आपकी इजाजत हो तो मैं सुना प्लीज, आई वुड लव टू हियर। तो मैं करीबन 19 साल या 18-19 साल का था, और सुबह 6 बजे की फ्लाइट से हम चेन्नई गए, और एक होटल के उसमें बैंक्वेट हॉल में ये दृष्टिबाधित बच्चों के साथ चेन्नई के, वी वर डूइंग अ प्रोग्राम वेयर आई वाज लीडिंग। तो मैंने तब तक इतना पढ़ा चुका था दृष्टिबाधित बच्चों को कि आई रियली वाज डन विद द सॉब स्टोरी, because we treat special kids with special needs very differently than normal children. We don't crack the same joke. हम उसी तरीके से उनके साथ बातचीत नहीं करते, हम बड़े cautious हो जाते हैं, हर every guard is up. तो मैंने उन बच्चों की जो टीचर थी उनसे पूछा कि I would really like to know what is the advantage of being blind. क्या न देख पाने का कोई फायदा है? Because this is their life's reality. And the teacher, who was herself born blind, she was very, very, guarded about it. She said, "Nahi, Deepak, there is nothing good about being blind." And she was just basically convincing me. And I said, "Ki, ye aapka nazariya hai. Can I please ask the kids?" So she said, "Okay, I'll allow you to ask 4 to 5 kids. But after that, if they are uncomfortable, you have to apologize to the first 5 and stop the activity." Fair enough. So I said, all right, yeah. And I started asking these kids, and there was one girl, as I said, what is the advantage of being blind? Without battling an eyelid, Praneet ji, she said, "Oh, I can see a rainbow when there isn't one." She was, I think, 11, 12 years old, and I have never forgotten the chill I had in my, as I'm saying this story, I feel it all over again in my body. I thought, wow, here is somebody who has not only embraced who she is, but has now started to enjoy and celebrate it. Because she said, "I can see a rainbow when there isn't one," and all your eyes are fail in that department. So true. Yeah. So true. And I think there's so much for all of us to learn from that. Such a simple example, Deepak, but so much. I think रोज हम कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम निकालते हैं, and we start feeling sympathy for ourselves, when really, if we look at these people, and rather than sympathizing, but if we are able to empathize with them and understand them, we would be doing them a service as well as us. So this is such a beautiful story, Deepak. Thank you so much for sharing it with us. Deepak, now the next $1 million question asked in your book. Can you guess? How can someone make you feel more loved? Wow. I'm sure everybody listening to the conversation today wants the answer and will read the book just for this one chapter. So without giving it all away, please tell us what this was about. This truly, it is really $1 million thought-provoking question, Praneet ji, because I took so much time to answer it for myself. People around us, हमारे चाहने वाले, हमारे दोस्त हमेशा guess करते रहते हैं, हम भी guess करते रहते हैं. Yeah, I am sitting in Dehradun and I'm thinking, Praneet ji, I've been to your house, so I know you love art, so it's easy. But I think other than the few immediate clues, life is all a guessing game about how to make someone feel loved and how can others make us feel loved. ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि चंडीगढ़ का एक बड़ा अमेजिंग बच्चा है, उसके और मेरा दोस्त है, उसके थ्रू ये क्वेश्चन आया. हम शिमला में थे और he said to me, "Deepak, I've been asking ever since I was 14, what is your life lesson?" And he said, "Deepak, if what is your life lesson as a question was taken in the world already, what question would you ask to run your career?" And I thought that's fair enough.
And I thought, okay, what would I do? And this is the question that came in my head, that I would ask everybody in the world, how can someone make you feel more loved? Because that's what we really want. Oprah Winfrey gave her life lesson to us once. And she said that after doing 25 years of the Oprah Winfrey Show, there's one thing she learned about all people. And that is, everybody wants to know, do you see me? Do you hear me? And do I matter to you in any way? True. And I think this question facilitates the process of everyone being feeling validated. So मेरे लिए तो बड़ा आसान है प्रणीत जी. When I arrived at the answer, it was, people can make me feel loved by accepting my love and not questioning it. So if you show me affection and I am like, oh, Praneet ji, what's your agenda behind this? Or what do you want out of me? You know, we have these cautions. Have you also felt and noticed this in people? Now when you show love, people feel cautious about what do you want. Bilkul, bilkul. Nobody will take, when it comes to love, Deepak, or any other help, we live in a world, unfortunately, where even where we offer help, love is the biggest of them all. People wonder why. And from the point of view of the giver, you're just giving unconditionally. Unfortunately, the world has forgotten the concept of unconditional. Absolutely. No, so true. Waiting to read the book for these couple of questions that, that I skimmed through, and I'm waiting for a hard copy to read all this book, because mere khayal se, I think there'll be a lot of answers to a lot of our questions and problems. But one thing that has always amazed me, Deepak, this is about you as a person, कि इतनी छोटी उम्र में आपने इतना कुछ किया हुआ है. I'm going to reveal your age for the viewers, Deepak ji, if you don't mind. Deepak is only 24 years old, folks. And one particular part that Swati ji talked about was कि आप 2016 में आप अपनी टीम के साथ 100 दिन के लिए स्वीडन, नेदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस एंड हंगरी का यात्रा कर जिंदगी की बारीकियों की कहानियां ले आए थे. ठीक है. I know कि you met people who were basically impacted by the Syrian crisis, the refugee crisis, the conflict. Yes. What was it like dealing with people who were affected by war, directly affected by war? So there are two questions here, Deepak, if you don't mind. What was it like meeting these people? And how did your team stay above their sadness? They had to have, stories of sadness. It must have had a huge impact on each one of you. How did you stay above? Is Deepak here? It looks like his screen is frozen. Deepak, Praneet, can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, absolutely. Awesome. All right. So to answer that question, I would say, Praneet ji, the first part of it is meeting these people was really eye-opening, because when we think of refugees anywhere in the world, whether Syrian or otherwise, we often mistake that they are hopeless. They are full of pain and misery. And that is our first mentality. हमें लगता है कि बस इंसान बिल्कुल टूट गया है. पर जो इंसान जिसके घर में मिसाइल गिर रही है या जो एक युद्ध में है, वॉर जोन में है, if he is deciding कि मैं एक जहाज में बैठ के एक समुद्री रास्ते से किसी ऐसे देश पहुंचूंगा जिसका नाम भी मैंने पहले नहीं सुना, that means that person is full of hope. उस इंसान में इतनी उम्मीद है एक नए जीवन के लिए. Interesting, yes. और मीडिया वो नहीं दिखाता, unfortunately, because the negative sells. So you see this grim image of these people. But when I spent 90 days इनके साथ उन refugee camps में मैंने बिताए,
तो मुझे ये इस बात का एहसास हुआ कि इनमें सबसे ज्यादा उम्मीद है एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए। एंड माय पर्पस वाज कि हम जितनी समानताएं हैं भारत के या विश्व के लोगों में, उन रेफ्यूजियों में, उनको दर्शा पाए, ना कि दूरियों को। बिकॉज आई थिंक we anyways get to read headlines that are divisive. We already get to see breaking news that's distracting. My work was कि मैं किस तरीके से इन लोगों की कहानियों को इतनी सच्चाई से पेश करूं ताकि मेरी माँ जो देहरादून में एक पहाड़ी गांव में बैठी हैं, उन्हें लगे कि ये मेरी दोस्त की कहानी है, ना कि सीरियन रेफ्यूजी की कहानी है। तो पहला तो सवाल का जवाब ये था। प्रणीत जी माफ कीजिएगा, आपको शायद दूसरा हिस्सा दोहराना पड़ेगा क्योंकि आई लॉस्ट यू देयर। So the other part was कि how did you keep your team staying positive? There had to be, I'm sure, like you're saying, that they were filled with hope. Yes, that's a very positive emotion. But I imagine that there was a lot of sadness as well. And that had to have had an impact on your team. How did you continue work? How did your team stay positive, hold on to your positivity, hold on to the work you were there to do? That is an amazing question. I must tell you, I've never been asked that question ever in all these years of talking about the refugee tour. And it is a very valid question because when you are listening day in and day out, आप इतनी दुखद कहानियों को सुन रहे हैं। ऐसा बच्चा 14 साल का जिसका पूरा परिवार नहीं, पूरा मोहल्ला जो है वो passed away in the war. I met a man whose wife, they only had enough money to make one person fly because of the smugglers to Europe. Oof. And so the wife is now in Europe and the husband is still in Syria. And her life's mission is to get enough money to fly him in. And जब आप ये कहानियां सुनते हैं तो ये वो कहानियां हैं जो आपके जहन में एक तरीके से ठप्पा लगा देती हैं। So even when you come back to your hostel या Airbnb या hotel या refugee camp, जहाँ पे volunteers को ठहराते हैं, you are so consumed by it. To answer your question, एक रूल होता है जब भी मेरे साथ कोई फिल्म मेकर या टीम ट्रैवल करती है, उन्हें दिन में एक बार रोना अलाउड होता है और वो रोना सिर्फ अपने आप अपने होटल रूम में होता है। They cannot cry in front of the person. They can absorb the story and then they can weep. I also do it. तो पूरे 90 दिनों में आप लगा लीजिए कम से कम 70 बार तो मैं रोया ही होऊंगा। But I wash that from my system with those tears for humanity so that I can show up next day again, because I will not be able to do justice. मैं पूरा निभा नहीं पाऊंगा उस रोल को if I am getting emotional और मैं भावुक हो जाऊं आपकी कहानी सुनते हुए आपके सामने, क्योंकि मुझे लगता है फिर मैं बेहतर सवाल नहीं पूछ पाऊंगा उसके बाद। तो I think my only answer is we are allowed to cry, not in front of the people we are interviewing. And the other thing was the love of unexpected people. This last दिन फ्रांस में एक जगह है कले करके, और कले में one of the world's most volatile refugee camps. तो जो सूडानीज रेफ्यूजीज थे जिनके साथ 10 दिन मैंने बिताए, जब मैंने उनसे कहा कि अगली सुबह हम जा रहे हैं, so they said you come back in the evening to our camp. तो बहुत बड़ा कैंप है, मतलब 7,000 रेफ्यूजी हैं। तो उनके इलाके में कैंप के जब हम गए, you would not believe, Praniji, in the middle of a refugee camp, they prepared a farewell dinner for me and my team. And we ate out of newspapers on a very musty ground. But the love of people was unbelievable. I think, Deepak, what you are talking about is something that is universal. It doesn't matter where, what, and people who have actually seen suffering probably have more love to give because there's more appreciation. Is such a beautiful thought. Yes. Wow. Beautifully said. Deepak ji, can you share with us the hardest story, one of the stories that you've mentioned out of the 70 days that you cried, one of the stories that has had the most impact on you as a person? This is a story from Punjab, actually. So you'll find it interesting. जैसे ही आपने कहा hardest, it immediately flashed in front of my eyes. It's a story. मैं 2015 में एक टूर के लिए पंजाब आया था,
and I was teaching 3,500 children across 6 cities. So Jalandhar, Amritsar, Firozpur, Tibri, और मतलब कई जगह मैं पढ़ाने गया. और जलंधर के स्कूल में Kenny ji, I was teaching. It was a big, massive room filled with kids, and I was doing introductions. And there was one child जिसकी एक आंख खराब थी. He couldn't see. It was an injured eye. और जैसे ही मैं उस बच्चे के पास पहुंचा, तो you know how in school everybody starts laughing and making fun of you. और वो बच्चा, उसका चेहरा इतना लाल हो गया गुस्से में that he wanted to punch somebody, because of course you feel humiliated. A person has come from outside और आपके दोस्त या क्लासमेट्स आपका मजाक उड़ा रहे हैं और बहुत उसको अलग अलग नाम से चिढ़ा रहे थे. So I know that feeling because I was bullied in school, and I know what it feels like to be, you know, embarrassed in front of the whole class. तो मैंने उसे हाथ पकड़ के मैं उसे स्टेज पर ले गया, and मैंने उससे कहा मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसका सच जवाब देगा. So he said, all right. I said, do you study? He said, yes. I said, do you come to school on your own? He said, yes. I said, do you have a favorite food? He said, yes. I said, do you play sports? He said, yes. और मैंने ऐसे कई सवाल पूछे, उसने हाँ ना करके जवाब दिया. फिर मैंने वही सवाल क्लास के बच्चों से पूछे. Do you come to school? Do you study? Do you have a favorite subject? And they all replied yes and no. And then I turned to the class and I said, everything you do, he does with one eye. Who should feel bad about their less talent, him or you? True. And there was this pin drop silence in that auditorium. And I remember looking at that boy, and for the first time, I think in his life, he saw his disability in the light of a power that he had over his class. Superpower, yes. And I thought, and the reason it's a very powerful story is because I remember thinking to myself, and he cried, I cried. I mean, you know, I was like really moved to see him feeling confident. But I thought to myself, if we can provide the same narrative to every single child coming out of a school, अगर हम हर बच्चे को एक ऐसी कहानी उसके बारे में सौंपें जिसपे उसे न सिर्फ विश्वास हो बल्कि वो उसकी एक तरीके से रक्षा कवच बन जाए as he's growing or she's growing older, that would be the best gift to give children in the world. And that's why it's so impactful. Is there any such story that in this book that covers, you know, these issues of bullying and the teenage issues of body shaming that children today are facing? Is there any story in your current book? It's actually covered widely because I was heavily bullied in school. मैं अक्सर बताता हूँ कि कक्षा 11 तक तो मेरे दोस्त ही नहीं थे. I sounded like a girl or a kid, and nobody wanted to be seen with a boy with a shrill voice. And I did try to have a pretend voice काफी समय तक. मतलब I wanted to sound like, yes, Praneet ji, I'm more heavier. But I could do that for first 15 minutes of the conversation. I couldn't sustain it for hours. So in the book, there is a question: are you grateful to your pain that it chose you over everyone else? And in the answer of that, I try to mention in detail how I felt being bullied and how I'm grateful to that pain now because it's my voice that pays my bills and takes me around the world. And so I'm very grateful that I learned to love how I sounded and not to be ashamed by how others made me feel about my voice. Bilkul. Which brings us back to an earlier discussion on the importance of asking the right question. You know, the way you have framed this question, what was it? The importance of, what you learned from your pain. Yeah, are you grateful to your pain? Are you grateful to your pain, right? So I think that's a lesson for us all, that here you are, you had a tough childhood, yet you're able to give so much back to everybody. You know, framing the right questions, that's so important. Anandita ji, do we have time for one more question? Yes. Oh. Yes, Praneet ji, please. Deepak ji, आखिरी में मैं आपको एक और सवाल करना चाहूंगी. आपको कैसे लगा जब श्री अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर ने आपका गाना अतरंगी यारी गाया? That is a really nice question. Praneet ji, I'll tell you in all honesty.
मुझे उस, I think it is like an award, you know, having Mr. Bachchan sing a song for you. I was 26, I think 25 years old when that happened. I think अगर मैं जीवन में दोबारा एक और गीत ना लिखूं, it is enough and sufficient. क्योंकि कई बार मतलब अक्सर आप जब अपना लिखा नहीं पढ़ते, अपनी लिखे गीत नहीं सुनते, पर कोविड से पहले बिकॉज आई यूज टू ट्रैवल अ लॉट, तो एक मरतबा दिल्ली एयरपोर्ट पे, क्योंकि मैं देहरादून से हमेशा फ्लाई करता हूँ, तो देयर इज अ लेओवर इन दिल्ली बाय डिफॉल्ट टू फ्लाई एनीवेयर, एंड आई हैव 2 hours every time I fly in Delhi. और एक मरतबा बस मैं बैठा हुआ था, आई वाज हैविंग अ टेरिबल डे, एंड सडनली यू नो हाउ एट एयरपोर्ट पे प्ले सॉन्ग्स, वो चलती रहती है प्लेलिस्ट उनकी, एंड अतरंगी यारी केम ऑन, and I remember I was sitting right across that Fab India store in the domestic terminal of Delhi, and I thought to myself, this is my gift to myself on a bad day, and having Mr. Bachchan sing it is phenomenal. And in fact, when my first poetry book came out, so I wrote to him that I would like to come and present the book to him. So I went to his house. That was like Sone Mein Suhaga, because when you go into Mr. Bachchan's house, it's a whole different experience. And his first question to me was, आपकी कविताओं के इस संग्रह में अतरंगी यारी गाना है कि नहीं है? तो मैंने कहा सर गाना तो नहीं है. So he was like, whenever you do the next edition, I want the song in it because it's one of my favorite songs of my career. Oh, how lovely, how lovely. So I consider it a true blessing, and my friends love that song too. So I feel very happy because it's a friendship song. And when your friends lovely. Absolutely lovely. The words of it, the meaning behind it, and of course, Amitabh Bachchan ji's voice to it, you're in heaven. Thank you so much, Deepak ji. It was such a pleasure talking to you as always. I'm going to now pass it back to Swati to take the questions from the audience. Thank you, Praneeth. Thank you, Deepak ji. Can we request members of the audience, please let us know. I think there is a question from Roshni. Roshni, please unmute and ask your question. Okay, she's typed her question, so I can probably read it out. She's congratulated you, Deepak ji, and she's saying, great to see a young, aware mind with such depth. What are the 3 topmost difficult questions according to you from your book or otherwise? Roshni ji, thank you for your wonderful wishes. I'm very grateful. I'm going to play it smart. I will tell you one question in verbatim. It is question number 12 in the book, which is, if forgiveness was essential to breathing, how often would you choke? अगर सांस लेने के लिए माफ करना जरूरी हो, तो आपकी सांस कितनी बार अटकेगी या थमेगी? अगर मुझे लगता है most people answer this in a very diplomatic fashion, but if you sit by yourself and you answer this question, you can really take your time to get it done. और बाकी जो क्वेश्चन, रोशनी जी, I won't tell you. I will tell you the question number so that you get the book and read it. It is question number 38 and it is question number 44. So now I will let you discover what those questions are and then tell me if they were tough for you as well. Thank you, Deepak ji. And as you're mentioning about your book, let me tell all the members who are attending this session that all those who send their postal addresses to me in the next 2 days will get copies of the book from Prabha Khaitan Foundation. Oh, wow. That is amazing. Thank you. Deepak ji, my personal question to you, we want to hear some poetry. जी, क्या आप सुनना पसंद करेंगी स्वाति जी? आपका कोई भी फेवरेट पोएम, जो आपने कुछ गाना लिखा हो, एनीथिंग दैट इज. चलिए, मैं आपको पहली जो किताब है, इतना तो मैं समझ गया हूँ, उससे कुछ पढ़ के सुना देता हूँ. Sure. This page just opened up, so I think it wants to be read. Generally, you know, I try to do like a swap and a plan, but this is what it has come to. नज्म का उन्वान है सीख, और कुछ इस तरीके से है कि मैं सालों से घरौंदे बनाता रहा रेत पर, और लहरें आकर मस्ती में उजाड़ देती उन्हें. मैं सालों से घरौंदे बनाता रहा रेत पर, और लहरें आकर मस्ती में उजाड़ देती उन्हें.
सागर ने सिखाया वो फलसफा हंसी कि लहरों से खफा न हो जो तबाह आशियाना तेरा करें, बल्कि तारीफ कर उस रेत की जो देती है हर बार घरौंदा बनाने का हौसला तुझे। मैं सावन में अरसों से पतंग अपनी उड़ाता था, छत पर होकर तैयार मांझे चरखी के साथ जंग लड़ने जाता था। कमबख्त हवा हर बार धोखा दिया करती, मेरी पतंगों को काटकर दूसरों की छत पर पहुंचाया करती। आसमां ने लगाई आवाज, जोर से मुझे समझाया, न हो खफा उस हवा से जिसने तेरी पतंग को गहरों के पास पहुंचाया। तारीफ कर उस डोर की जिसने कट कट कर भी हजारों बार तेरी हर नई पतंग के साथ एक नया रिश्ता बनाया। तारीफ कर उस डोर की जिसने कट कट कर भी हजारों बार तेरी हर पतंग के साथ फिर नया रिश्ता बनाया। So I think it again reminds Magical. people. Magical, you know, Thank you. absolutely poetic. And, you know, I don't think we want to stop at one. Anyone from the audience who would like to ask a question, we'd be happy if you unmute and please ask. I think there was Rima wanted to ask a question. Please, can I request you to unmute? Okay, while Rima is coming on, tell us about your experience with Mr. Bachchan, Deepak ji. I think with Mr. Bachchan, I think Swati ji, one of the most vivid memories I have is of being in his home to present the book to him. And he was so gracious and courteous that I learned from him that success will take you all over the world. Humility will help you get home. Because when I was in his house, there were trophies and there were accolades और मतलब ऐसी ऐसी तस्वीरें ऐसे ऐसे लोगों के साथ कि you would want to be a fly on the wall in that house. But I thought a person, एक ऐसा शख्स जो पूरे विश्व के लिए इतना प्रेरणादायी है, इतना प्रेरक है, how does he live in this house? And I think meeting him and seeing his humility gave me that answer. Wow, fabulous. We have Rima Mukherjee ji who would like to ask a question. Rima ji, over to you. Hi, sir. Am I audible? Yes, Yes. you are. Thank Hi, you. sir. It's so good hearing you. You've made this Saturday afternoon so beautiful. Can you tell me, does the world really offend you or amaze you? I mean, really, I want to know. I think it's question number 5 in the book, or Yeah. third or something. I would say, Rima ji, thank you for that question. I would say, I hope it continues to amaze me, because if it offends, I will not be able to do half of the work I'm doing. अब सोचिए 14 साल की उम्र से मैं लोगों के साथ बैठ के उनकी कहानियां सुन रहा हूँ. Which is beautiful. Yeah. Thank you. Yeah, if I would be offended at any level, I will not be able to hold space. I have spoken to and taught at Dasna, Gurgaon, Faridabad prison to convicts and people who have been sentenced to life imprisonment. I have taught, children in Nepal post the earthquake. I've taught people who've been former militants. तो मुझे लगता है ऐसे लोगों के साथ भी जिन्हें सामाजिक दायरे से हमने ऑलरेडी निष्कासित कर दिया है, उनके साथ बैठकर बात करना बड़ा मुश्किल होगा if it doesn't amaze me at some level to understand what forces a person to commit a crime or what forces a mother to love so selflessly. So it really amazes me. मतलब अगर आप में से कोई भी कभी देहरादून आए, you will be amazed. I take the same route for all these years from my house to my studio. And every day, I still find something amazing. In fact, Project Fuel make activity which I would like to tell all the members to try. Try staring at the sky and then look after 5 minutes. And then look again after 5 minutes. I'm telling you, you will be amazed every 5 minutes, even if you're just staring at a plain blue sky with the beauty of amazement and wonder that you'll see. तो कई बार देहरादून में जब मैं स्टूडियो में बड़ा थक जाता हूँ तो मैं दिन में आराम से चटाई बिछाकर हमारा जो गार्डन है उसमें I stare into the sky and all my friends find it weird because person my age they're like you're not like 60 years old that you have to do this.
But the thing is, we don't have to get to 60 to enjoy nature and wonder. We can do that at 28, 29 as well, so that when we get to 60, maybe we can go to a club and party. So we can switch the volumes. Thank you. We have another guest. Can I please request Smita Singh ji, to unmute and ask her question? And after that, we can have Rachna Gupta. Swati, you need to read out Smitaji's question actually. So Smita ji's question is, as we all know, you're managing so many things beautifully. What next for you? Thank you for that question, Smita ji. I actually have been working with the Maasai tribe in Tanzania. आपने नाम सुना होगा Maasai tribe का. They've been credited as one of the first human beings born in the cradle of mankind in Africa. और उनके साथ मिलकर एक community center, आप विश्वास नहीं करेंगी, because you all are women, you would be fascinated to know that the women of this tribe and the young girls of this tribe walk 9 hours to fetch water every day. This is in 2020. 9 hours every day. And when I was in their house, every sip of water felt like someone's 9 hours effort. So I promised the woman who fed me that day that I will do something. And पिछले 2 सालों में we tried to gather funds to build the community center and the water harvesting unit. तो वो अभी तैयार हुआ है 15 दिन पहले, and the women have started to use it. And now we are fundraising for making the school and the library as part of the community center. So that's what I'm working on. और अगले February में I will be going there to inaugurate the community center officially. And yeah, all of you can follow the project, and if you wish, you can join us too. So you can see more updates of it on Project Fuel or my page. Fabulous. Wonderful. I have a question which I've received on my phone from Yogeshwari ji, and she is asking that you happen to come from a small town of Dehradun. Do you think people who come from smaller towns have more fire in the belly? I'm not sure about fire in the belly, Swati ji, but definitely more innocence. I think, at least I can talk about the people I know. हम में ना एक पहाड़ी या एक छोटे शहर की मासूमियत होती है. हमें लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी है और लोग सच में बहुत अच्छे हैं. और I think it of course backfires a lot of times, you know, because I lived in Bombay also for 9 years, so I know it's a big city and they're beautiful people, but you have to adjust, and your small town innocence often, you know, gets mistaken, and it's slow for people. But to answer the question, I would say there is hunger to prove. क्योंकि छोटे शहरों में बड़े शहरों जितने अवसर नहीं होते. जब मैं बड़ा हो रहा था, nobody even in my wildest relative family tree would have thought I would become a lyrics writer or an author. मतलब अभी पिछले 3 सालों तक मेरी मदर जब भी मैं घर आता था छुट्टियों में तो मुझे कहती थी बैंक के फॉर्म निकले हुए हैं भर लो, because she thought that's a more secure future. So I think in smaller towns the need to prove and make you know, something of every opportunity life throws at you is much higher, and I'm sure Praneeth ji will agree. In places like Amritsar, in places like Chandigarh, Dehradun, there is an unspoken pressure, right, Praneeth ji, of wanting to do good. I think there's a certain degree of wanting to prove yourself as well. You know, from a smaller town, 2 things to it, if you don't mind my, you know, weighing in on this, is Yes. number 1, you feel that you want to prove yourself. At the same time, that innocence you talked about helps you see things in a different light. And that ability to see things in different light is what leads to people like Deepak writing books like this. Because in a larger city, you take things for granted. A lot of things. I guess we all see things in a different way, but things that would otherwise, you know, just be part of your everyday routine are noticed differently when you come from a different perspective. So Yeah. I don't know if it's so much about big city, small city, it's just the difference in perspective. No, absolutely. And you're very right. I think, for example, यहाँ देहरादून में आज भी middle class families में जब कोई बाहर से रिश्तेदार आता है
उसे मॉल दिखाने ले जाते हैं. I don't think so in Bombay you will ever do that. You know, here it's a pride that we have a mall in the city and let's go and spend a Sunday at the mall. I find that so beautifully amazing because it's an aspiration and everybody wants to be part of that aspiration, Swati ji. Fabulous. You know, your entire journey as a lyricist, what inspired you, and along with the lyricist, do you sing? And can we hear something? Maybe one of the songs that you've penned? Oh my God, that is the most. I say that's why I write songs because I can't sing to save my life. Halaki, when I went to Amritsar last year, I did try to set up a context with the song, but uh, I will accept your request, but not to say that I sing, but to encourage everybody who's listening that I would encourage you to listen to folk songs because folk songs में इतनी सुंदर कहानियां हैं that I don't even think so my books have even begun to comprehend or any books have begun to comprehend क्योंकि वो जो लोकगीत हैं वो किताबें हैं जो महिलाओं ने बच्चियों ने दादियों ने और पुरुषों ने लिखे हैं साल दर साल. तो I was in Kutch this January, and there was a beautiful song the Kutchi community taught me, and the song goes like the context is of a brother, and it says Tallariya mangariya re o moro bhai lare rahiya agame gukhariya ro des bido ban jaro re agame gukhariya ro des bido ban jaro re. And the song means ki it's a very simple song of a brother who's leaving to be a Banjara, who's basically leaving from a small village to the big city. And the sisters are singing ki Tallariya Mangariya Re from the community. You know, Moro Bhai Thare Rahiya, Lare Rahiya means stay with us. Don't go. जो बालों के घूमर जैसे जो देश हैं, जो शहर हैं, उनमें मत खो जाओ. और फिर मतलब बहुत गाने की जो आगे वो हैं पंक्तियां हैं वो बड़ी अच्छी हैं कि लाई मत कीजो रे ओ मोरो भाई माता ने माताड़ी ता रोवे दिन रात और मोरो भाई तलरिया मंगरिया. तो एक लोक गीतों का जो सार है स्वाति जी वो इतना सुंदर है कि इफ यू स्पेंड योर एंटायर लाइफ टाइम जस्ट लिसनिंग टू फोक म्यूजिक of different states, you will be so much more wiser and so much more richer in vocabulary. So that's my purpose of singing and humming that horribly off-tune track of mine. Wasn't off tune to say the least, but I want to ask you, you know, your proficiency in languages, be it Hindi, be it English, even, you know, your association or synthesis with local culture is so deep. Were you a reader as a child? जी काफी हद तक आई वुड से रीडिंग रियली एक्साइट्स यू अबाउट लैंग्वेज क्योंकि शब्दकोश सिर्फ शब्दों को याद करना नहीं है उन्हें अपनी भाषा में उतारना है. एंड व्हेन यू स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद व्हाट लैंग्वेज डज एंड व्हाट इट मीन्स यू विल बी अमेज्ड. परसों किसी ने मुझे प्रोजेक्ट फ्यूल में ही सम टीम मेंबर टोल्ड मी देयर इज अ वर्ड ग्रीक वर्ड कॉल्ड स्ट्राइकहिडोनिया और इसका मतलब है द प्लेजर ऑफ सेइंग टू हेल विद इट. And I think I say that so often in my work to hell with it, that I was amazed that there is a word to describe the feeling of that empowerment to say to hell with it. जो गढ़वाली कल्चर है जो मेरा है यहाँ उत्तराखंड का उसमें एक शब्द है जिसका नाम है खुद. और खुद जब हम कहते हैं ना आई एम मिसिंग यू तो यहाँ उत्तराखंड में कहते हैं कि तुम्हारी खुद लग रही है. और खुद का मतलब इतना सुंदर है स्वाति जी that there is no official translation of this word in any world language or dialect. It means to miss somebody to the degree where you forget oneself. तो तुम्हारी खुद लगना means I forgot myself to remember you. And I think the gravitas of that, मतलब कहते हुए ही मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. तो मुझे लगता है भाषा से प्रेम करने के लिए जितना आप लोगों से उनकी लैंग्वेज में बात करेंगे जितना पढ़ेंगे you know it's amazing and that's why Prabha Khetan Foundation's role I feel is so important क्योंकि my friends were amazed when I started doing the PKF sessions and they couldn't believe that there was actually an institution
trying to promote language, both folk and cultural, in the context of learning more, and they have been amazed. So I mean, I really want to say thank you to PKF, because otherwise half of these things would not come out, and you would not admire the poets you've grown up watching and saying, I love that word and I'm going to use it in my next PKF session. So that's what I feel. Thank you so much for bringing out that thought, because on behalf of Ehsaas women, not just of Bombay but of India, even my heart goes out to Prabha Khaitan Foundation for developing this entire literary cultural fabric of the country. You know, for people like us have that exposure of culture, language, it's absolutely beautiful. And you know, at some point it's also getting lost. So thank you PKF, thank you Sandeep Bhutoria for doing this for all of us. Yes. Thank you all of PKF and Ehsaas Mumbai. You know, very, very heartful gratitude. Deepak ji, if I have to sum you in very, very few lines, all I would say is that good things definitely come in small, young packages. Your voice is lilting, your thoughts are profound, your words are poetic, and your persona is magical. Thank you so Thank much you. for being with us. Praneeth, thank you so much for joining the Ehsaas Mumbai team. Thank you Honored so and much, grateful, Swati. and all the members of the audience, I'm sure you absolutely mesmerized by Deepak Ramola today. For his book, I just repeat once again, please message me your addresses in the next 2 days and you will get your copies, and you will be able to find answers and questions to all your questions and answers. Thank you. Thank Good you. evening. Thank you. Stay Thank you, safe. Swati ji, and thank you, Praneeth ji. Thank you. Thank Bye. you so much. Thank you, everybody.